Hello guys, welcome to another session of photosynthesis by Biology Entrance Guru. In last session we discussed about photosynthetic pigments. There were three types of pigments that we discussed in the last session. It was chlorophyll, carotenoids, phycobilins, all these three. Now today I am starting with a new topic, that is absorption and action spectrum. This is a topic which many of you students, they don't understand in your class or find it very difficult to understand. So I would be simplifying this action and absorption spectrum today. They are a very important part of photosynthesis. So let us start with them. First of all, we come over to the absorption spectrum. Now, what exactly is absorption spectrum? When we are talking about spectrum automatically means you are showing the activity of something. Spectrum means you are showing the area of something, not exactly activity but the area. And now we are talking about absorption spectrum. That means we are showing the area of absorption. Since we are discussing photosynthesis, that means we are showing the area of photosynthesis which are shown by different pigments. Absorption spectrum of various photosynthetic pigments. Okay, so what pigment will show maximum absorption of the sunlight at what wavelength or at what area? It means this thing. So if we go according to the proper definition of absorption spectrum, it would means we are representing the spectrum graphically. So it is a graphical representation of degree and portion of wavelength of light which is absorbed by a particular substance, which in this case are photosynthetic pigments. So let me just write it for you so that it becomes more and more easy. This is the graphical representation of degree and portion, in which area and how much, it means of degree and portion of wavelength is absorbed by photosynthetic pigments and photosynthetic pigments. So this is the exact definition of absorption spectrum, where you need to focus on the degree, on the portion of wavelength which is being absorbed by photosynthetic pigments. Absorbs. We are discussing about the absorption spectrum. So it is basically absorbed. That means how much wavelength and in what area that wavelength is absorbed. Okay. So for example, let us first of all take the absorption spectrum of chlorophyll A. Okay. So here I would be discussing chlorophyll A first of all. Chlorophyll A. So what we need to see now, in which area chlorophyll A is going to absorb the light and how much light. Okay. So on this axis, on y-axis, we would be looking at the degree of absorption, how much absorption is there, and in this region, that is the x line, we would be showing the wavelength. Wavelength in nanometer. So here let us say this is 400 nanometer. Okay. Then we have 500 nanometer. Then we have 600 nanometer, and then we have 700 nanometer. Okay, 400, 500, 600, 700 nanometer. So now we want to see, now these nanometer or these wavelength, this is according to the absorption spectrum, or this is according to the spectrum that we all know, Vibgyor. Okay, we know Vibgyor, isn't it? So we all know that sunlight, if you keep a prism in front of sunlight, it's going to break the sunlight into 7 different colors, which is Vibgyor. So according to that, we have kept here the wavelength 400, 500, 600 and 700 nanometer. So let us see, chlorophyll A is going to show the maximum absorption of sunlight in which region, at which wavelength. Okay. Okay. So here Vibgyor, these are several wavelengths. I'll just show you an image in order to show at what wavelength which color is present.
Here you can have a look. See, violet will start from 400, 450, then we have green, yellow, orange, red. Okay, so red will come somewhere around at 700, or you can say after 650 red would start. Okay, so if I am saying chlorophyll A is absorbing the wavelength at 435 nanometer, sorry, if I am saying that chlorophyll A is absorbing the sunlight, or it's showing the maximum absorption of sunlight at 435 nanometer, that means somewhere here 435, that means it's absorbing the sunlight at violet region. Or if I say that chlorophyll A is absorbing the sunlight at 673 nanometer, so it will be somewhat here. So it means it is absorbing the light in red region. Okay, so these are specific terms which you need to know. Let us go back, I will show you how it works. Talking about chlorophyll A, so chlorophyll A is going to show the light absorption in blue region and red region. In both the region, that means over here in the blue region and in the red region, it is going to show the absorption of sunlight. Okay, it will show the absorption of sunlight. So blue region and red region. And its absorption maxima, or when you call absorption maxima, it would means maximum absorption. Maximum absorption of sunlight in blue region would be at 435 nanometer and 673 nanometer in red region. Okay, so let me draw a graph accordingly. So when we are talking about 435, that means it's going to be somewhere here, 435. Okay, this way it's going to show its absorption maxima. It drops down. Then no absorption in this specific region. Then again at 673, that means somewhere near the 700. 673, let us say this point. Again it is going to rise and it will show its absorption. Like this. Alright. Better to be drawn in this way. Then again it goes down, drops down. So here this is 435 nanometer and this is 673 nanometer. Okay, so here I am just talking the peak. When I am saying 435 and 673, it means the peak absorption, the maximum absorption is shown in this. Apart from this, the maximum absorption in red region can also be at 683 or 703 nanometer. Okay, so at any of these three region, it can show its maximum absorption. Okay, it's showing a region, but maximum absorption is at 673. This is the region, or this is the region starting from somewhat around 400 up till 440 or 450, but maximum is at 435. So this is for chlorophyll A. Then talking about chlorophyll B, let us take some different color for chlorophyll B. Let us say it's green in color. So when we are talking about chlorophyll B shows absorption in blue region and red region again. Since we are talking about chlorophyll B, so it is blue and red region both. In blue region, it will show its maximum absorption at 453 nanometer. And in red region, it will show at 642 nanometer. Okay, so we are talking about blue region, that is 453 nanometer. 453, 450, this is 450, this is going to be somewhere around 453. Okay, and 642, so somewhere here. So when we are talking about this one, let me show you. Like this, and it sharply drops down again it goes straight, and then again it will abruptly rise like this, and then drops down again like this. So this is chlorophyll B with green in color. Yes, so here you can see
It showed the maximum absorption, chlorophyll B. It starts from down, it goes up, where somewhat around 450 region. So this is 453 nanometer. And again it drops down and goes up in the red region, where at 642 nanometer. This is for the chlorophyll B. Then let us talk about carotenoids. Let me show it with the blue color. Carotenoids. Carotenoids, they absorb light at 449 nanometer and 478 nanometer. Okay. So if we need to show them, it will be somewhere again here around 453. So let us consider this to be 449 and over here it's 478. So somewhere here. Like this, and then again it goes straight. No absorption in red region. So you can see carotenoids, it's showing maximum absorption at 449 and 478, both belonging to the blue region, blue violet region, isn't it? See, blue violet region. So this is how absorption spectrum is made. You have seen how you can make it in your exams and what exactly is the meaning of absorption spectrum. यहाँ पे कैरोटिनॉइड्स ने अपनी जो अब्जॉर्प्शन दिखाई है वो 449 नैनोमीटर और 478 नैनोमीटर पे दिखाई है. 449 और 478 नैनोमीटर मींस वॉयलेट रीजन या ब्लू रीजन. कैरोटिनॉइड्स रेड रीजन में कोई अब्जॉर्प्शन नहीं दिखाती है. अपार्ट क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी रेड और ब्लू दोनों ही रीजन्स में दिखाती है. ठीक है. नाउ हियर वन थिंग दैट आई वुड डिस्कस इज क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के बीच में डिफरेंस. क्लोरोफिल बी को हमने देखा कि इसका जो अब्जॉर्प्शन है वो ब्लू रीजन में ज्यादा है. कैन यू सी दिस इज क्लोरोफिल बी और ये क्लोरोफिल ए है. इसका अब्जॉर्प्शन पीक अब्जॉर्प्शन आप देख सकते हो क्लोरोफिल ए से ज्यादा जा रहा है यहाँ पे. तो क्लोरोफिल बी का अब्जॉर्प्शन ब्लू रीजन में ज्यादा होता है, जबकि अगर हम क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी को कंपेयर करें रेड रीजन में तो किसका ज्यादा होगा? ब्लू का क्लोरोफिल ए का ज्यादा होगा या क्लोरोफिल बी का ज्यादा होगा? यस, यू कैन सी इट इज क्लोरोफिल ए. क्लोरोफिल ए का अब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल बी से ज्यादा है. डिग्री ऑफ अब्जॉर्प्शन यू कैन सी दिस वाज द डिग्री ऑफ अब्जॉर्प्शन. सो यहाँ पर क्लोरोफिल ए का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्लोरोफिल बी. लेकिन हम दोनों की ही अगर बात करें, अगर हम इसमें डिफरेंस ना करके हम कहें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी साथ में अब्जॉर्प्शन कहाँ ज़्यादा दिखा रहे हैं, सो बोथ ऑफ देम टुगेदर दे आर शोइंग मोर अब्जॉर्प्शन इन ब्लू रीजन वी कैन से एज कम्पेयर टू द रेड रीजन. What I just said, I said chlorophyll B, when you talk about the chlorophyll B, it shows more absorption as compared to red in case of blue region. Chlorophyll A will show more absorption as compared to chlorophyll B in red region. But when you mix them together, when you talk about chlorophyll A and chlorophyll B together, you will see that more and more absorption spectrum or more area or more degree of absorption by both of them is shown in blue region as compared to the red region. Is this clear? I hope absorption spectrum should be clear to you. This is what I made. Let me show you more neatly. You can see this is the absorption spectrum which you are going to look in your NCERT or any other refresher. This is the diagram. देख सकते हैं आप यहाँ पे chlorophyll A is showing its maximum absorption at over here which is 435 nanometer. Okay, then over here it is showing more at 675 nanometer. Same way this is chlorophyll B which is showing its maximum absorption at 453 nanometer, and chlorophyll B over here in red region will show at 642 nanometer. And same way with the carotenoids which are only showing your absorption spectrum in the blue region and not in the red. Yes, this is about the absorption spectrum. Now let us start with the action spectrum. After absorption spectrum, coming over to the action spectrum. Okay, so coming back to the action spectrum now. When we are talking about action spectrum, pigments, they are absorbing wavelength of light, and after absorbing this wavelength वो क्या अपना एक्शन करेंगे. यहाँ पर हमने जो absorption spectrum पढ़ा, the absorption spectrum that we read over here, we saw that these photosynthetic pigments, they are absorbing wavelength, different wavelength of light. After looking at this कि हमने यहाँ पे ये देखा कि वो कौन सी wavelength of light को कहाँ तक absorb करते हैं, right? कि ब्लू रीजन में वो कितना अब्जॉर्ब कर रहे हैं, रेड रीजन में कितना अब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये हमने देख लिया किस हद तक वो अब्जॉर्ब करते हैं और कहाँ अब्जॉर्ब करते हैं.
बट अब्जॉर्ब करके वो करते क्या है, व्हाट इज द एक्शन आफ्टर अब्जॉर्बिंग, सो दैट इज शोन बाय द एक्शन स्पेक्ट्रम. ओके, after absorbing the light at that specific wavelength, what is their action? Okay, so over here we were talking about photosynthetic pigments. So photosynthetic pigments का action क्या होगा? The action is going to be photosynthesis. So graph, so you can write down the definition. Graph representing effectiveness of different wavelength length of light to perform photosynthesis. So this is what the action spectrum is all about. Now here in action spectrum we will see in which region and at what wavelength action spectrum will be maximum. Okay, in which region and at what wavelength action spectrum is maximum or the photosynthesis is maximum. This action spectrum, very important, it was first of all studied by the scientist whose name was Engelmann. Okay, Engelmann, Engelmann. And Engelmann, he used, this is N, okay, Engelmann. Engelmann, he used two organisms for the action spectrum. First organism is Spirogyra. Okay, and another was Cladophora. Now when you talk about Spirogyra, it's a green algae. It's the green algae. And when you talk about Cladophora, it is a bacteria and it is oxygen loving bacteria, you can say. Oxygen bacteria, oxygenic bacteria, it loves oxygen. That means it is going to flourish in that region where we have ample amount of oxygen or a huge amount of oxygen. Spirogyra is an algae, Cladophora is in bacteria. Spirogyra is green algae. Since it's a green algae, so it belongs to plant kingdom and it will be performing the photosynthesis. Now let us look what actually Engelmann he did. Now talking about Engelmann, he tried to split the sunlight into different wavelengths. What he did, he kept a prism. He kept the prism and he splitted the sunlight into 7 different colors. Okay, this is prism. With the help of this prism, he divided the sunlight which fell on this prism. That sunlight got divided into the 7 different colors. That is Vibgyor. You know that, isn't it? Vibgyor. Okay, so let us keep it this way. Okay, you have some indigo color also in between violet and blue, so it gives you 7 different colors. Okay, now after splitting this sunlight into 7 different colors, he tried to determine the rate of photosynthesis in every region. He experimented, and what did he experimented? He tried to saw इस रीजन में, दैट मीन्स वॉयलेट ब्लू रीजन में कितनी फोटोसिंथेसिस होगी, ग्रीन येलो रीजन में कितनी फोटोसिंथेसिस होगी, रेड रीजन में कितनी फोटोसिंथेसिस होगी. दिस इज व्हाट ही ट्राइड टू सॉ. ओके, different wavelength of light over here. Now you have splitted them on 7 different colors. Now what he did, he kept Spirogyra. He kept Spirogyra over this Vibgyor. That means Spirogyra को उसने रखा जहाँ पे 7 different colors उसने split करे. Now when Spirogyra over here, which was kept over here, अब क्या करेगी Spirogyra? Since it's a green algae, it's going to absorb all these colors and it is going to show photosynthesis. So
It absorbed these different wavelength of light and it showed its photosynthetic activity. So in every region the photosynthetic activity was measured by Engelmann. अब उसे कैसे पता चलेगा कहाँ पे कितना स्पाइरोगायरा फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं? How will he know? Isn't it? So for that अभी हमने स्पाइरोगायरा को रखा, स्पाइरोगायरा ने अपना काम करना शुरू कर दिया, फोटोसिंथेसिस करनी शुरू कर दी, लेकिन फोटोसिंथेसिस कहाँ पर कितनी कर रही है वो एंगलमैन को कैसे पता चला? उसके लिए ही बॉट अनदर ऑर्गेनिज्म. आई टोल्ड यू कि उसने 2 ऑर्गेनिजम्स यूज करे थे. पहला स्पाइरोगायरा जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगी इन डिफरेंट वेवलेंथ पर, और उसके बाद उसके ऊपर उसने रखा क्लैडोफोरा को. क्लैडोफोरा मैंने आपको बताया इट्स एन ऑक्सीजन लविंग ऑर्गेनिज्म, इट्स एन ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया. तो वो जहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन होगा वहाँ ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करेगी, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है वो वहाँ ग्रो ही नहीं करेगी, जहाँ कम ऑक्सीजन है वहाँ कम क्वांटिटी में ग्रो करेगी. Isn't it? And we know when we write the formula for photosynthesis, what do we write? We write CO2 along with water using the sunlight and photosynthetic pigments, that is chlorophyll. इन सब को यूज करके बनता है food for the plant which is glucose, C6H12O6. Along with this, oxygen is released as the byproduct, isn't it? This is the byproduct. That is the food, isn't it? This is the reaction of photosynthesis. Photosynthesis में कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुआ, वाटर यूज हुआ, सनलाइट यूज हुए, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट्स है वो यूज हुए, एंड ऑल दिस रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन फॉर द फूड ऑफ द प्लांट. Along with that, there was releasing of the oxygen. Oxygen is released as the byproduct of photosynthesis. The oxygen that we are intaking from these plants, from where that oxygen is coming? It is coming from the photosynthesis. It is released as the byproduct, the waste product which is not required by the plant. So जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज हो रही है वहाँ पर that means automatically ज़्यादा photosynthesis हो रही है. ज़्यादा photosynthesis होगी तो ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा, isn't it? High amount of photosynthesis will give high amount of oxygen, और अगर high amount of oxygen है that means उस एरिया में high amount of cladophora होगा, isn't it? Less amount of photosynthesis that means oxygen कम रिलीज हुआ, वहाँ पे cladophora ग्रो होगा लेकिन बहुत कम, और no photosynthesis means no oxygen, that means no cladophora. तो अब उसने स्पाइरोगायरा जहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर रहा है उसने वहाँ पे क्लैडोफोरा को ग्रो करा. द एंगलमैन ट्राइड टू ग्रो क्लैडोफोरा ओवर देयर. सो व्हाट डिड ही सॉ? ही सॉ दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी. लेट मी शो यू. ये हमने प्रिज्म के बाद तोड़ी थी लाइट्स. ठीक है. व्हाट डिड ही सॉ? This is the growth of cladophora. Okay. Here is the spirogyra जो कि photosynthesis show कर रही है, and this is cladophora over here. All this is the bacteria that you can see. Like this. So this is the cladophora. Based on its growth, उसने इस तरीके का spectrum दिया, which is actually represented like this. Like this. Okay. So this is the blue region and this is the red region. This is the action spectrum. ठीक है. एक्शन स्पेक्ट्रम मतलब हम एक्शन की बात कर रहे हैं, जो अब्जॉर्प्शन हुआ लाइट का अब्जॉर्प्शन फोटोसिंथेसिस पिगमेंट जो कि स्पाइरोगायरा के अंदर थे उन्होंने अब्जॉर्ब करा. उसके अंदर क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी था, ग्रीन एल्गे है. उसने अब्जॉर्ब करी मैक्सिमम लाइट इन ब्लू रीजन एंड रेड रीजन, और मैक्सिमम एक्शन उसने इन्हीं रीजन्स में दिखाया.
ठीक है, अभी तक टिल एक्शन स्पेक्ट्रम वाज नॉट परफॉर्म्ड, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वाज नॉट देयर, अभी तक वी डिडंट न्यू व्हाट वाज द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. मैंने आपको बताया मेन फोटोसिंथेटिक प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए होता है, लेकिन टिल नाउ वी डिडंट न्यू दिस. Once we performed this experiment, once the Engelmann performed this experiment for action spectrum, then he compared this action spectrum with the absorption spectrum, and it was observed that where the chlorophyll A showed the maximum absorption, there is the highest rate of photosynthesis. This confirms that at that particular wavelength there was the maximum photosynthesis at that particular wavelength. This proves that yes, the chief pigment which is involved in the photosynthesis is chlorophyll A. Right, so this was about the action spectrum and absorption spectrum. Now we are left with one last experiment, that is immersion experiment. Okay, so let us start with immersion experiment. Now Emerson was the name of the scientist, and what he studied the effect of light of different wavelength. This represents wavelength on photosynthetic activity in which organism? In unicellular green algae chlorella. Yes. Now what Emerson did, अब उसे पता चल गया ब्लू रीजन और रेड रीजन में ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो रहा है, ज़्यादा एक्शन आ रहा है. सो ही यूज्ड 2 डिफरेंट वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ उसने उठाई लाइट्स की, और उन वेवलेंथ पे ही सॉ दी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कि किसमें कितनी ज़्यादा फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हो रही है. He observed that after 680 nanometer, अगर हम मोनोक्रोमैटिक लाइट देते हैं, मोनोक्रोमैटिक लाइट मीन्स a single color light, that means either a light of blue color, either a light of red color, monochromatic. So you can add it over here, effect of monochromatic light. Okay, light of single color. Mono means single, chroma means color. मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, हमने अलग अलग वेवलेंथ पे सिर्फ ब्लू रीजन में से उठा के एक वेवलेंथ की ब्लू लाइट डाली, फिर अलग रीजन की ब्लू लाइट डाली. सो अलग अलग उसने वेवलेंथ की लाइट्स को क्लोरेला पे स्टडी करा. तो उसने देखा कि 680 नैनोमीटर के बाद जो मोनोक्रोमैटिक लाइट अगर आप देते हो, तो अगर 680 नैनोमीटर के बाद आप किसी भी मोनोक्रोमैटिक लाइट को डाल रहे हो, तो इट विल रिजल्ट इन शार्प डिक्रीज इन फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी. फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी एकदम से कम होती है आफ्टर 680 नैनोमीटर. ओके, सो दिस वाज कॉल्ड रेड ड्रॉप. 680 नैनोमीटर, जो 680 का एरिया होता है, दैट इज द रेड रीजन. सो उसने रेड कलर की लाइट डाल के 680 नैनोमीटर के ऊपर की जो रेड लाइट थी, बिकॉज आई हैव शोन यू, अगर आप यहाँ पे देखो, आप देखो रेड रीजन में 680 के बाद भी 700 पे भी रेड लाइट आती है, 700 से ऊपर भी रेड लाइट आती है. लेकिन अगर आप 680 के ऊपर की रेड लाइट डालोगे किसी भी वेवलेंथ की, 700 नैनोमीटर की, 690 नैनोमीटर की, 710 नैनोमीटर की, तो वहाँ पे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं होती. यहाँ पे आप देख सकते हो 700 नैनोमीटर पे आप क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी को कंपेयर करो, आफ्टर 680 नैनोमीटर कोई फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं है. सो दिस इज व्हाट ही ऑल्सो ऑब्जर्व्ड. तो उसने इस चीज़ को रेड ड्रॉप कहा. ही कॉल दिस थिंग एज रेड ड्रॉप, दैट आफ्टर 680 नैनोमीटर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में एकदम से ड्रॉप आता है, विच इज कॉल्ड एज रेड ड्रॉप. लेटर अगेन उसने क्लोरेला में ही स्टडी करा कि अगर आप रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में एक शॉर्ट वेवलेंथ डालो, यू पुट अ शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट. शॉर्ट वेवलेंथ लेट अस से 650 से लेके हम 680 नैनोमीटर तक देखते हैं. शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट दैट इज बिटवीन 650 टू 680 नैनोमीटर तक हम देखें, तो ही सॉ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज लेस. फोटोसिंथेसिस था बट लेस था, देयर वाज लेस फोटोसिंथेसिस. आफ्टर 680 तो था ही नहीं, लेकिन 680 से पहले 650 से 680 उसने देखा फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी बहुत कम होती है. ओके, लेट मी शो यू ओवर हियर. दिस इज अ ग्राफ विच सेज इन दिस रीजन दिस इज रेट ऑफ
फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारे पास है 650, 680, 700। ओके, सो उसने देखा जब उसने 650 से लेके 680 तक की लाइट डाली तो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस था वो कम था, 650 to 680। आफ्टर दिस व्हाट ही डिड, अब उसने दूसरी वेवलेंथ ली, ही टुक अ लॉन्ग वेवलेंथ। सेकेंड वाज ही टुक अ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ, दैट इज 700 से 720 नैनोमीटर तक की। 700 से 720, अभी तक हमने देखा 680 नैनोमीटर के बाद देयर वाज सडन ड्रॉप, बट नाउ ही टुक 700 नैनोमीटर वेवलेंथ। 700 से 720 नैनोमीटर तक he took the wavelength. Okay, so 700 to 720 नैनोमीटर तक। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व हुआ, द सेम थिंग, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी यहाँ पे भी कम थी, फोटोसिंथेसिस वाज लेस इन दिस रीजन ऑल्सो। शॉर्ट वेवलेंथ डाली उसमें भी कम फोटोसिंथेसिस, लॉन्ग वेवलेंथ डाली उसमें भी कम फोटोसिंथेसिस। नाउ व्हाट ही डिड, थर्ड थिंग व्हाट ही डिड इज, अब उसने दोनों ही वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ और लॉन्गर वेवलेंथ, दोनों एक साथ डाली। ही पुट शॉर्टर वेवलेंथ एंड लॉन्गर वेवलेंथ टुगेदर, दोनों को एक साथ डाला, एंड व्हाट ही फाउंड वाज, दोनों जब अलग अलग डाले थे पहले, बट व्हेन ही प्लेस्ड बोथ ऑफ देम टुगेदर he found the rate of photosynthesis to be increased by somewhat around 25%। इस तरीके से जब उसने दोनों ही एक साथ डाले। Okay, so when put together like this, or instead you can make your graph to be like this. This was when both were there. So you can see rate of photosynthesis, it increased by 25%. Rate of photosynthesis में 25% का increase था। That means this increase in photosynthetic activity that you see when you are putting shorter wavelength and longer wavelength together simultaneously, this is called as immersion effect, or you can also call it as enhancement effect. Enhancement means एक ने दूसरे को enhance करा। Okay, so this is enhancement effect. Now इससे हमें क्या पता चलता है? So coming over to the conclusion of immersion experiment. Conclusion of immersion experiment. इससे हमें ये पता चलता है कि, और दिस गेव द एविडेंस, पहला एविडेंस हमें ये मिला कि फोटोसिंथेसिस में देयर आर टू फोटो सिस्टम, देयर इज presence of two photo systems. Okay, there are two different photo systems which are processing different wavelength, which are processing different wavelength ऑपरेटिंग इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो एक हमारे पास शॉर्टर वेवलेंथ सेंटर है, फोटो सेंटर है, एक हमारे पास लॉन्गर वेवलेंथ फोटो सेंटर है। शॉर्ट आपकी वेवलेंथ आती है तो वो शॉर्टर वेवलेंथ फोटो सिस्टम जो है वो ऑपरेट करते हैं, लॉन्ग वेवलेंथ आती है सनलाइट की तो बड़ा वाला जो फोटो सिस्टम है वो ऑपरेट करते हैं, दोनों साथ में ऑपरेट करते हैं मिलके, तो फोटोसिंथेसिस का रेट अपने आप बढ़ जाते हैं। So he concluded that shorter wavelength and longer wavelength has lesser effect on photosynthesis, but when they together are given, so there is the rate of photosynthesis will increase. So what did he concluded? Conclusion was in plants there are two photosystems. दो तरीके के फोटो सिस्टम्स हैं। Let us see. There are two photo systems. Okay, there is photo system 1 and then there is photo system 2. Photo system 1 and photo system 2.
photosystem 1 gets activated at longer wavelength of light. While photosystem 2, it gets activated at shorter wavelength of light. Yes. Okay, so this is about the plants. photosystem 1 and photosystem 2. photosystem 1 longer wavelength of light पे activate होता है, photosystem 2 lesser wavelength of light पे activate होता है. ठीक है, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, हम प्लांट्स की बात करें. Now if we are talking about bacteria, then in bacteria there is presence of only one photosystem except in case of blue green algae. सारे बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही फोटोसिस्टम 1 होगा, फोटोसिस्टम 2 नहीं होता इन केस ऑफ बैक्टीरिया. अगर हम बात करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे या साइनोबैक्टीरिया की, तो उसी केस में 2 फोटोसिस्टम होते हैं. अदरवाइज रेस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दे विल नॉट हैव सेकंड फोटोसिस्टम. इन प्लांट्स वी हैव गॉट सेकंड फोटोसिस्टम. So this is all about the experiments about the absorption and action spectrum. Now in next session we are going to discuss about the photosystem structure. What are the differences between photosystem 1 and 2, कौन सी wavelength पे ये लोग light absorb करते हैं, and then we eventually will start with the light reaction. Thank you so much.